Hello students, welcome back to our online class with Best English School. So students, in this video we would like to start our chapter 5, acids, bases and salts. So in the video lecture I have already explained you the first 3 pages of this chapter, right students? I have told you about the 5.1 acids and bases, about the acids and acidic nature, chemical nature, and the basic chemical nature is basic. And then we have talked about the indicators, the natural indicators around us. Litmus, I have told you to experiment that one also, and you all have done it very well, and I'm too much happy about that, students. So we have done the 5.1 activity also and 5.2 activities also. So right now we will discuss about this one and continue our chapter, students. So this chapter would be completed in this video because there is experiments about it, so that would be easy to do it. So now you can see over here, this is also an experiment with the China rose. You can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with soap solution with the help of a cotton bud. You will get a beautiful greeting card. See, you can try this one in any birthday. That is not compulsory that you have to make this greeting card on your mother. You can do it with your father also and your brother, whatever is your wish, but you can do this one. It's easy and that will have very fun to do the greeting card by this process, students. Okay, so now we will see the China rose as indicator, how we can choose and use the China rose as an indicator. See, experiment activity 5.3. Collect China rose. गुधल, उसे गुधल बोलते, पेटल्स. चाइना रोज के पेटल्स कलेक्ट करो एक बीकर में. Add some warm water. See, over here we have come. Add some warm water. Keep the mixture for some time till water becomes colored. Use the colored water as an indicator. Add 5 drops of the indicator to each of the solutions given in table 5.4. What is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solutions? China rose indicator turns acidic solutions to dark pink and basic solution to green. So students, see what is going on over here is that you have to collect China rose. आप इस पिक्चर में देख सकते हो. See, this one is the China रोज़. ये जो फ्लावर आप लोग ने देखा ही होगा, ये फ्लावर को बहुत जगहों पे. तो इसमें क्या किया गया है, यू हैव टू टेक अ शील्ड and first one would be the acid, second one would be the indicator and the third one would be the base. Okay, and you have to give the petals on over there under that 3 stalks. Now you can see that the color of these 3 have been changed. इसके जो कलर है वो चेंज हो जाएंगे because you have added this one in the indicator, and you will see the differences about the color. The color would change in the acidic substances and to the dark pink color, magenta color, or a basic solution of green color. So you can see these 3 colors have been changed when we put the petals of the China rose, students. Now see, this is little bit written. Coffee is brown and bitter in taste. Is it an acid or a base? Don't give the answer without any taste. You are in the dark with its taste. Activity 5.4. The teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from his or her school laboratory or from a nearby school: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide or calcium hydroxide, or lime water.
So C, demonstrate the effect of the three indicators on each of this solution, record your observation. So इसमें 5.4 में क्या बोला गया है स्टूडेंट्स कि आपको ये जो है आपके स्कूल लेबोरेटरी में या फिर कोई भी नियर बाय स्कूल्स में आप यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिडिक एसिड, ये जितने एसिड्स हैं उसको आप एक पोर लाइम वाटर में पोर करो एंड थ्री इंडिकेटर्स, तीन अलग अलग इंडिकेटर्स में रखो और ऑब्जर्व करो कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, व्हाट आर द डिफरेंसेस अबाउट दिस वन स्टूडेंट्स। ओके, now we will see the neutralization. We have learned that acids turn blue litmus red and bases turns red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolpenthelion. Phenolpenthelion. So we were discussing 5.3 neutralization students. So हम लोग ने ये जाना है कि एसिड्स जो है उसको हम लोग ब्लू लिटमस में करेंगे टर्न तो वो रेड कलर होगा और रेड को हम लोग ब्लू में कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है एसिड को बेस के साथ मिक्स करने का वो हम लोग कैसे करते हैं, इंडिकेटर्स के थ्रू। तो अभी तक आप लोग ने ये बात नहीं किया होगा बट अब आपको ये चीज़ का पता है कि इसे क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं फेनोलपेंथेलियन। Yeah, I know students, this word is very much difficult to pronounce it, but shortly you can pronounce it very well. So that is phenolpenthelion. PHE phe, NOL nol, PHT phent, hel, HL hel, ion. Okay, phenolpenthelion. That is the pronunciation, phenolpenthelion. Right, and you have to learn this spelling because this question is very much important. So we will see the activity 5.5 to be demonstrated by the teacher in the class. Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. Note down the color of phenolpenthelion solution also. Add 2 to 3 drops of the indicators to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in color of the acid? No, let's see. You have to take a test tube and आपको ये सारे मिक्स करने हैं फेनोलपेंथेलियन के साथ। उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स आपको इंडिकेटर्स में एसिड के ड्रॉप चेंज करने हैं। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें कोई चेंजेस हो रहा है क्या। Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. Stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. Now add 1 more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. Add again 1 drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in color? The solution again becomes pink in color. It is evident that when the solution is basic, phenolpenthelion gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it turns colorless. So see students, एक एसिड के साथ आप मिक्स कर रहे हो पेनोलथेलियन को तो वो एक डिफरेंट कलर चूज़ कर लेता है। वो कौन सा कलर है? पिंक कलर। दैट phenolphthalein have been changed in a pink color students, and if you are not adding that one in acidic, so the phenolphthalein would be colorless. वो कोई एकदम उसका कलर चेंज होगा ही नहीं। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या प्रोसेस बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। सी यू कैन सी इन दिस होल पिक्चर अबाउट दिस वन with the base that is colorless and with the
acid that have been changed in a pink color, students, right? So that is easy to understand it. Now we can see this one. When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced or evolved. The evolved heat rises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. Salt may be acidic, basic, or neutral in nature. Thus, neutralization can be defined as follows. So students, in the process of neutralization, when we are adding in the base or in the acid would be having a color or the pink color, right? And if you will observe and if you will touch that test tube, you can see that the temperature have been rise. So you will observe that the temperature is rise up. Why? Because the mixture reaction is having a temperature. जो mixture हमने add किया वो उसका एक टेम्परेचर होता है, इसलिए वो राइज अप हो गया. तो ये जो रिएक्शन हुआ और उसका एक न्यू सब्सटेंस बना, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट. Why? Because salt have been acidic also, basic also, or neutral also in nature. For example, this neutralization have been defined as follows. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. For example, acid plus base is equal to would be salt plus water, जिसमें heat इन्वॉल्व होता है. ऐसे एक रिएक्शन आप देख सकते एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH से ऐड करेंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl वाटर के साथ मतलब H2O के साथ ऐड हो सकता है और वो फॉर्म एक न्यू एक्सपेरिमेंट फॉर्म क्रिएशन कर सकता है. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ नेसेसरी कि इसके जो भी हमने बात किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, HCl. सोडियम हाइड्रोक्साइड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, NaOH. सोडियम क्लोराइड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, NaCl. और वाटर का तो हमें पता ही H2O स्टूडेंट्स, राइट. सो this one up to over here, this one is very important in the process of न्यूट्रलाइजेशन स्टूडेंट्स. तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन एंड गिव द गिवन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ हीट. सो उसका पूरा आंसर ये होगा स्टूडेंट्स, ओके, जो मैंने आपको अभी समझाया एक्सपेरिमेंट वाले के साथ स्टूडेंट्स. ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट. नाउ वी विल गो फॉर इट 5.4 न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. सबके लाइफ में, एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से होता है. सो फर्स्ट वन इज इंडाइजेशन. आवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू have learnt in chapter 2. But too much of acid in the stomach causes indigestion. Sometimes indigestion is painful. To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. So students, सबसे ज़्यादा पहला हमारा होता है इंडाइजेशन. हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ये चीज़ हमने चैप्टर 2 में बात की है. तो स्टूडेंट्स, इफ़ आवर स्टोमक हैविंग सम टाइप ऑफ इंडाइजेशन प्रोसेस, दैट वुड बी कॉज्ड बाय द एसिड ऑल्सो ओनली. इफ़ वी वांटेड पेनफुल, if that would be painful and you wanted to cure that one, so milk
मिल्क पीने से वो क्योर हो जाता है, बिकॉज मिल्क इज़ हैविंग अ मैग्नीशिया एंड वी आर हैविंग दैट वी कुड कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिससे क्या होता है जो एक्सेसिव एसिड होता है वो थोड़ा कम हो जाता है स्टूडेंट्स. ओके, फर्स्ट वन इज इंडाइजेशन, सेकेंड वन इज एंट बाइट. When an ant bites, it injects the acidic liquid, formic acid, into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, sodium hydrogen carbonate, or calamine solution, which contains zinc carbonate. अब इसमें सेकंड क्या है, एंट बाइट, मतलब हमें एंट बाइट कर ले तो क्या होता है, तो वो उससे क्या होता है एसिडिक लिक्विड हमारे स्किन में फॉर्म करता है. तो आपको उसको ठीक करना है, क्योर करना है, तो आप बेकिंग सोडा, वी ऑल नो सबके घर में बेकिंग सोडा तो होता ही होता है. तो बेकिंग सोडा को आप जहाँ पे एंट ने बाइट किया है उसमें आप रब करोगे तो वो तुरंत के तुरंत ठीक हो जाएगा. स्टूडेंट्स, ट्राई इट. मुझे भी ये नहीं पता था बट अब मुझे पता है, सो आई कैन डेफिनेटली डू दैट वन. सो ट्राई दिस वन स्टूडेंट्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज soil treatment. Excessive use of chemical fertilizers makes the soil acidic. Plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, calcium oxide, or slaked lime, calcium hydroxide. If the soil is basic, organic matter, compost, is added to it. Organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of the soil. सो स्टूडेंट्स, सॉयल ट्रीटमेंट. अब देख लो कि सॉयल में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने नहीं देते. वाई? बिकॉज उसमें ज़्यादा ही एसिड और बेसिक यूज़ हो जाता है. तो देखें तो वो सॉयल ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, बिकॉज वी हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स, chemical fertilizers. So if we wanted to treat that one, take a quicklime means calcium oxide और उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्लोक कर दो. तो फिर क्या होगा कि जो सॉयल है वो बेसिक हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा और ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड कर हो जाएगा. तो उससे क्या होगा कि एसिड्स, जो एसिड होता है स्टूडेंट्स, वो रिलीज़ हो जाएगा. तो उसका जो भी नेचर है, सॉयल का जो बेसिक नेचर है, जो जैसा सॉयल वो पहले था सेम टू सेम वैसे का वैसा न्यूट्रली हो जाएगा. वो कैसे होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमें ऑर्गेनिक मैटर से ऐड करेंगे तो ही होगा. स्टूडेंट्स, I hope that these treatment have been definitely done by the farmers, right? Because they used to do that one, so that would be helpful to them only. And if you are having someone you know who is farmer or they doesn't know this treatment, so you can tell that this treatment to them. So now, next and the last one is factory wastes. The wastes of many factories contain acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances. अब सबसे मेन इशू इज़ दैट फैक्ट्री वेस्टेज. वी ऑल नो जो भी फैक्ट्रीज़ के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम लोग पानी में, तालाब में, नदी में फेंक देते हैं, राइट? तो उससे क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हम लोग ने पानी में फेंका होता है उसके जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फिश एंड अ लॉट ऑफ other organisms who stayed in the water, they have been killed, they have been got some type of diseases also, and they having not so wealth health, right? So these factory wastage have been not neutralized it. So if we wanted basic substances तो हमें वो वाटर बॉडीज़ में नहीं, मतलब पानी में वेस्ट प्रोडक्ट्स को नहीं फेंकना चाहिए. बिकॉज स्टूडेंट्स, पानी में हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट फैक्ट्री के रखते फेंकते हैं वो लोग, उसके बाद वो वाटर बॉडीज़ खा जाते हैं, पीते हैं वो पानी ऑब्वियसली क्योंकि वो पानी में ही रहते हैं. फिर वो पानी
उनको हार्म कर देते हैं और बहुत लाइफ ऐसे के ऐसे अंदर मर जाती है। फिर यू ऑल नो द नॉन वेजिटेरियंस यू नो इट। फिर वो नॉन वेजिटेरियंस वो फिश को और वो खाते हैं, तो ऑब्वियसली वो डिजीज़ ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही आ रहा है, क्रिएट भी ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं और डिजीज़ भी ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस वर द चैप्टर 5 and now our chapter 5 have been completed clearly and I am so much happy to complete this one. So students, we will do these exercises very clearly and we will do the workbook also, so you should have to be prepared for this chapter, okay? And your homework is that you have to read the whole chapter one more time, and if you have any query, so you can ask me easily, okay students? So till there, I will see you in the next video with the next topic. So till there, stay home, stay safe. With the help of these lines, I would like to pack up and subscribe my channel, students, Best English School. Subscribe it. So now, bye bye and have a nice day.